अस्सलामुअलैकुम रब्बिश्रह लिली सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुम उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की वीडियो का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ। लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव इट, फियर इज़ नेचुरल, फेस इट, मेमोरी इज़ पावरफुल, यूज़ इट। नाज़रीन, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है गंधारा सिविलाइजेशन। This is the content of our video: origin of word Gandhara, introduction, geography, political history of Gandhara, language, religion, historical site, and of Gandhara civilization. Here you can see that this is the map of Gandhara civilization. Origin of the word Gandhara. The name of Gandhara may have several meanings. The most prominent theory relates its name to the word Gandh and Gan, which mean fragrance, and Har, which means land. Hence the simplest definitions being land of fragrance. गंधारा के नाम के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सबसे नुमाया नज़रिया इसके नाम का ताल्लुक लफ्ज़ गंध एंड गंध है, जिसका मतलब है ज़मीनी। लिहाजा गंधारा को खुशबू की सरजमीन कहा जा सकता है। Another word, gun and gun, is evolved from kun, which means well or a pool of water. Indeed, the word gun appears with many other place name associated with water. एक और नजरिया ये है कि गन और गन कुन से निकला है, जिसका मतलब है कुआं या पानी का तालाब। Introduction. Ancient civilizations that emerged in the region of present-day northern Pakistan and eastern Afghanistan. The Gandhara civilization emerged in the 6th century BCE. The Greek established a number of cities in the area, including Taxila and Peshawar. Gandhara civilization जो थी उसके जो कैपिटल था वो टैक्सिला था. Under the rule of Mauryan Empire, which controlled much of the Indian subcontinent in the 3rd century BCE, the Gandhara region became a hub of Buddhist learning and culture. Mauryan Empire में गंधारा civilization का जो मजहब था बुद्ध मत, वो आबोताब के साथ फला और फूला. The Gandhara civilization reached its peaks during the rule of the Kushan Empire in the 1st and 2nd century से. इसके अलावा जो गंधारा सिविलाइजेशन थी वो अपनी पीक पे थी कुशन एम्पायर में, जो कि अपने आर्ट, अपने फ़न तमीर और कल्चर की वजह से कुशन जो डायनेस्टी थी या एम्पायर थी वो बहुत जानियर मानी जाती है. Geography include area of northern Punjab and Kashmir and eastern Afghanistan. The Persian Empire easternmost area, Gandhara was a vital trade hub between Persia, Central Asia and India. Buddhism moved eastward from here, reached as far as Japan and Korea. जो गंधारा सिविलाइजेशन थी वो किसी एक तहजीब पर मुनहसर नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों का मजमुआ थी. मुख्तलिफ तहजीबें आपस में तिजारत करती थी. Gandhara was a region of Afghanistan that stretched from the Kabul River to Jalalabad. It included the northwest frontier provinces, agencies of Multan, Swat, Dir, Malakand, Bajaur, Punjab, Taxila, and part of the modern-day Pakistan. From Gandhara, Buddhism spread as far east as Japan and Korea. Political history of Gandhara. जो गंधारा सिविलाइजेशन थी वो किसी एक तहजीब का मरकज़ नहीं थी. मुख्तलिफ तहजीबें इस सिविलाइजेशन के अंडर फली और फूली. फर्स्ट ऑफ ऑल अकामनियत, जो कि 600 से 400 BCE में रही. ये जो एम्पायर थी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एम्पायर थी हिस्ट्री की. वॉज फाउंडेड बाय साइरस द ग्रेट, जो कि जानी और महनी जाती थी अपने कल्चरल अचीवमेंट की वजह से, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर की वजह से. ग्रीक्स 326 to 324 BCE, मूरियंस 324 से 185 BCE, इंडो ग्रीक्स 250 to 190 BCE,
Scythians 2nd century to 1st century BC, Parthians 1st century to 1st century CE, Kushans 1st to 5th century CE, White Huns 5th century CE, Hindus 9th to 10th century CE। लिहाजा जो गंधारा सिविलाइजेशन है मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज रह चुकी है। लैंग्वेज क्या थी गंधारा सिविलाइजेशन की? The language in the region is written on the earliest manuscript discovered in Asia, that is Prakrit language। Prakrit language क्या है जी? Prakrits were Middle Indo-Aryan languages spoken between about 500 BC and 500 AD. It appears on coins, inscriptions, and texts, most of which were written on the bark of birch trees and kept in labeled clay pots. Some of these texts are also the earliest discovered Buddhist texts, the Gandharan Buddhist text. Religion क्या था? What was the religion of Gandhara civilization? Hinduism, Buddhism and Islam। इसके अलावा भी बहुत सारे रिलीजन थे जो गंधारा तहजीब में रहे हैं। Hinduism was supposed to be the predominant religion before the Persian rule, as Gandhara had played an important role in the epic of Mahabharata. During the 2nd century BC, it was here that Buddhism was adopted as the state religion, which flourished and prevailed here for over 1000 years, starting from 2nd century BC until 10th century AD. After the Muslim invasions in 10th and 11th century, Islam prevailed in the region, which is still the dominant religion since the last 1000 years. Here is the historical sites। इसके अलावा भी बहुत सी historical places और sites हैं जो गंधारा तहजीब के दौर में बनाई गई थी। Here you can see the picture of Takhtbai। Takhtbai क्या है? Takhtbai is an archaeological site in Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. It is considered most well preserved Buddhist minority. It is one of the 6 World Heritage Site. The second one, you can see the pictures of Julian Taxila. Julia is part of the Taxila archaeological site that was considered the center of learning in Gandhara. End of Gandhara civilization. One of the main factor was the decline of Buddhism in the region. सबसे जो बड़ा main factor माना जाता है कि गंधारा civilization के end की या decline की क्या वजह बनी, that was the Buddhism religion, जो कि Buddhism had been the dominant religion in Gandhara। Buddhism religion जो था वो dominant religion था गंधारा तहजीब का, जो कि 5th century BCE से start हुआ। It had begun to wane, लेकिन 5th century CE से इसने अपनी जो popularity थी वो खोना शुरू कर दी, in part due to the rise of the Hinduism and Islam in the region, जिसकी जगह हिंदुइज्म और इस्लाम ने ले ली थी। Another factor that contributed to the decline of the Gandhara civilization was invasion by the Huns and other Central Asian tribes। इसके अलावा जो दूसरी वजह बनी गंधारा सिविलाइजेशन के ख़त्म होने की वो था बैरूनी सिविलाइजेशन या बैरूनी कौमों का हमला, जो कि इन एरियाज में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। आई होप सो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स आपको गंधारा सिविलाइजेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है रिलेटेड टू अवर टॉपिक तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।